So we'll do the pre-market and market analysis for this Bank Nifty and Nifty 50, post-market and pre-market. So if we see what was the plan, I had not marked that we can go for buying side above this level. Anyway, now if we see this, market had this kind of range that yesterday high it had made. Okay, and today what happened when market came into this area? So first thing, understand that whenever regarding the first 5 minutes candle, okay, if first 5 minutes candle has a wick towards downside, that means it is not that strong candle for the upside. Okay, it is not that strong candle for the upside move. You can go and check any of the candles. Okay, if it has a wick towards downside, it is not that strong for the upside. But if it does not have a wick, it will be very strong for upside move. So if you go and see, this is not having a very small wick. Okay, so you can see there was a huge upside move. If you'll see this, you'll get to know. As a good wick, market was not good for upside move. This may be same. Market has a longer wick towards downside. Whenever there is a longer wick towards downside, that means that the market will be giving you a pullback. Okay, market will be definitely giving you pullback. So over there, this is based on the particular observation of the market. So if you see this first candle had a wick and then small pullback it came, then it started going up, then it came down. Any of the market, if you see that if the first candle is a completely green candle, okay, if the first candle is a completely green or the red candle, it will be giving you movement towards that side only. Okay, now let's see on the analysis. तो अगर 15 minutes में देखें तो it took support from the 50 EMA. Yesterday market had closed around 200 EMA and today it opened with a gap up and it showed a rejection. Okay, so small trades could have been formed for up to 100 and 200 points, which even I had gone for the same. Okay, when market particularly started rejecting from here and showed a trend, so I had looked for the selling side from here. Till this point of time, not much. 150 points of a scalp I had done this and I achieved, and after that I had booked all the targets and then got out of the market. Okay, so this was one trade. Now rest of the market was basically, if what was the plan, if market is opening flat or basically breaking this rejection, we can go for the buy side. Remember, in pre-market we can only analyze that what we can take the action tomorrow, but the most important thing is that how are we going to take up the trade in the live market. Okay, that matters the most. Means the execution part will matter the most. Okay, how you are executing. Let's say we had a plan that we had no plan for the market, that if it is breaking, what do we have to do? So we need to make accordingly. Now if you can see properly, this is forming at this point of time. We had a round bottom pattern. Okay, if you see this, remember I taught you this round bottom pattern. So market went up, it came into this huge range. ठीक है, breakout आ गया range का, तो एक particular level that it has broken this huge candle 3, 5, 6, 7 से almost for 100 points could have taken all the profit maybe you would have made. But when we could have gone for the trade, यहाँ पे जा सकते थे या फिर यहाँ पे भी जाते, ठीक है, and stop loss आपका होता long position here, stop loss would have been somewhere around 90 points. Target जो होता है इस पर सीधा 35,000 के लेवल पे हम लोग रखते हैं. मतलब पहला तो हमारा ऑब्वियस सी बात है दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन मैक्सिमम R3 यहां तक. तो यहां पे कुछ टारगेट बुक करना होता है बिकॉज दिस इज एन लेवल फ्रॉम वेयर मार्केट कुड हैव रिवर्स्ड, एंड इफ यू सी इट टुक सम टाइम टू ब्रेक दिस लेवल एंड व्हाइल कमिंग डाउन आल्सो इट टुक सपोर्ट. नाउ आई कैन नॉट रियली से दिस कि अभी मार्केट यहां तक चला गया है तो वी कुड हैव बुक्ड एट ऑल दीस प्रॉफिट्स. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल to book all the profits in one shot. It could have reversed. Then what I would have told? मैं क्या बोलता? तो हमेशा याद रखो कि it's very important to book all the profits which like partial profits are very important to be booked. ठीक है, तो एक ट्रेड या तो यहाँ पे ले सकते थे या फिर इस कैंडल पे छोटा मोटा, ठीक है, ले सकते थे. एंड स्टॉप लॉस जो होता ये 200 EMA के नीचे रख सकते थे हम. टारगेट पहला यहाँ पे, ठीक है,
मैक्सिमम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा हम लोग पहला तो वी हैड टू बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड मैक्सिमम टिल 34,000 तक ही रहता, क्योंकि 35,000 वाज अ वेरी स्ट्रांग लेवल। इफ दैट लेवल इज गेटिंग ब्रोकन, अनदर 100-200 पॉइंट्स व्हिच वी वुड हैव गॉट आल्सो। आप देखोगे कि लास्ट में मिला है, बट अगेन क्लोजिंग प्राइस इज 35,100, मतलब यहां पे ही क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। एक अच्छा खासा मूव मिला आपको 1:4 का, जो आप कह सकते हो कि कैप्चर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, बट अगर कैप्चर किया तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला, नहीं कैप्चर किया तो देन नहीं मिलेगा। तो प्राइस एक्शन अगेन राउंड बॉटम, यहां पे पहला यहां पे बुक हुआ, दूसरा दिस लेवल, और मे बी एट 35,000 यू कुड हैव बुक, ठीक है। नाउ इफ वी सी राइट नाउ फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 EMA is here and this is the point, it has broken the level, ठीक है, ये लेवल ब्रेक कर चुका है 35,000 का, मतलब कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो लास्ट मिनट की ब्रेकआउट है, अगर आप इफ यू कैन सी दिस 35,000 लेवल पे इट केम एट 2:15 समवेयर, ठीक है, 2 o'clock का, it waited for 1.5 hour, so that means we'll see in the option chain also. So if you see this option chain here, we do not have the data, but that point of time option chain was having a strong resistance at all these levels. रिफ्रेश करके दिखाता हूं अभी क्या सीन है। तो अगर आप देखोगे अभी 35,100 पे है, देखो आज 88,000 कॉल ऐड हुआ, आज 88,000 कॉल ऐड हुआ है, ठीक है। All these levels, if you see 59,000 people booked their profits and everything, and these levels got stronger, ये नीचे का लेवल निकलता गया, and all these 94,000 people have taken almost 700 rupees, ये पूरा 700 rupees has been the change it has come, means decay। मॉर्निंग का एक प्रीवियस डे का क्लोजिंग था 700 rupees and today it came around zero. So this is the option on the expiry, anything can happen any point of time if your trade goes wrong, ठीक है। and if you see the maximum trade was done on 35,000 level only, यहाँ पे 1 CR का वैल्यू वॉल्यूम है, and यहाँ पे there is a volume of 67 lakhs, ठीक है। तो ऑप्शन चेन एट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की 35,000 सॉरी सपोर्ट बिकम, जब ये ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि पीपल विल बी शिफ्टिंग इट टू द अपोजिशन। सो एज सून एज द 35,000 broke 30 minutes stayed away, that means there was a less chances that market could have come downside, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, एंड हुआ भी वही सीन कि मार्केट ऊपर रह गया। निफ्टी 50 इनिशियली इफ आई कंपेयर दिस विद द बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 वाज वेरी वीक व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द बैंक निफ्टी, ठीक है, इन द मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग। तो वी हैड प्लान्ड आवर फर्स्ट ट्रेड कि क्या था कि हमारे दूसरे पॉइंट पे ही मिल गया हमें ट्रेडिंग, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी गॉट आवर ट्रेड्स। स्टॉप लॉस छोटा सा लगता, यहां पे रख सकते थे या फिर यहां पे भी रख सकते थे, टारगेट S2 तक, ठीक है, वी गॉट ऑलमोस्ट वन गुड 1:1.3 के आसपास में मिला हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लान इट वाज कि मार्केट इफ इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर वी कुड हैव गॉन। नाउ दूसरा था कि इफ मार्केट इज अगेन रिवर्सिंग फ्रॉम हियर वी कुड हैव गॉन फॉर द बाय साइड। वापस से अगर इफ यू सी दिस क्लियरली इन 5 minutes टाइम फ्रेम, डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट रीटेस्टिंग, एवरीथिंग इज डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 50 EMA के आसपास हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जाते ये लेवल लेते, टारगेट हम लोग मैक्सिमम जो रखता ये पॉइंट डे हाई तक रखते 1:1.4। अब जब डे हाई ब्रेक हुआ तो 16,000 डे एंड तक आपको R1 R3 यहां तक मिला है, बट वी कुड हैव हैप्पीली बुक अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहां तक ये पूरा 5 मिनट्स का फ्लो बुक कर सकते थे, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड होता निफ्टी 50 में। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कुड हैव व्हाट वी हैव टू डू नाउ नेक्स्ट डे। अब अगले दिन क्या करें, मार्केट ने तो एक बार ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखते हैं व्हाट वी हैव अवेलेबल फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी फॉर निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 का एक्सपायरी के लिए 22 जून, there is not much data as of now because अभी नहीं आएगा डेटा इसमें, but still over here if you see this 16,200 is a strong level where people have still they have made this some position, ठीक है, मैंने यहाँ पे इधर है, तो 16,200 is strong level and 170 is the closing price, that means क्लोज करते हैं सारे इंडिकेटर्स को,
ओके ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ है दैट इज अ बिट ऑफ वीक रेजिस्टेंस, थोड़ा सा वीक है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू ऑल। तो वही हमारा सिंपल सा है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है कल, ये भी नहीं चाहिए, ये सब फॉर द डे इट इज, इफ दिस लेवल गेट्स ब्रोकन, ये वाला 400 का पॉइंट आएगा, थोड़ा थोड़ा ऑब्स्टिकल जो होगा पुल बैक के लिए आ सकता है यहां से ये लेवल, ठीक है, ये लेवल हमारा पुल बैक तक आ सकता है, रुकेगा। इन केस इफ मार्केट ओपन्स विद अ गैप अप, स्लाइटली गैप पुल बैक, वी कैन गो फॉर बाय। यहाँ पे पहला टारगेट 350 पे बुक करना है, देन लास्ट 400 पे, ठीक है। नाउ टू गो फॉर द सेलिंग साइड, इफ वी सी इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। मतलब इन केस मार्केट रिवर्स करता है अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम 130 के आसपास, एंड इफ इट इज रिवर्सिंग देन वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड यहां से या फिर ये पूरे लेवल पे। सेलिंग के लिए जाना होगा, लेट्स से मार्केट फर्स्ट कैंडल ओपनड विथ अ गैप अप and it is taking rejection from here and coming down, then we can look for the selling side below 16,200 level for somewhere around 80 to 90 points we can look, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे सेलिंग के लिए हो गया, अब इन केस गैप डाउन ओपन होता है तब, अब देखो अब कैंडलस्टिक्स के लुक, सी आई हैव टू डू द स्कैल्पिंग, सब चीज तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। बट इन केस लेट्स से कि मार्केट में अभी ओवरऑल देखेंगे हम, तो स्टिल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ 16,400 जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कल ब्रेक कर दे, बिकॉज इफ यू सी द फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट इज कंप्लीटली रिजेक्शन, सेकेंड हाफ इट वेंट अप, ठीक है। एंड क्लियरली इफ यू सी दिस इज द पॉइंट 250 जो मैंने बोला भी आपको कि ये पहला टारगेट ये ब्रेक हुआ, then market will give me 350 and then maximum 400 we will be taking it up। तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे सारे बनाए हुए भी हैं मैंने, ठीक है। let me just extend this lines, ठीक है। अब ये 400 ब्रेक हुआ then 500, ठीक है। इस तरीके से हमें always remember to book some partial profits in the bank nifty and nifty 50। अब सेलिंग का क्या सीन हो सकता है यहाँ पे, what we can do for selling side, कि इन केस एक तो यहाँ पे अगर से रिवर्स होता है, इन केस गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो सेलिंग बिलो दिस लेवल वी कैन लुक फॉर इट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो सही चल रहा है अपना, डेली टाइम फ्रेम में देखें हम लोग तो 35,400 लेवल पे आपका 50 EMA है, दैट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। एंड 1 hour time frame if we see it has broken the 200 EMA, so do not get confused that 50 and 200 EMA are like universal indicator, it acts as support and resistance in all the time frames, ठीक है। higher time frame will give me better accuracy for the higher picture, okay, बड़े picture के लिए, ठीक है, wider picture it is good for us। एंड if we see 15 minutes का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये ब्रेक तो कर चुका है बट क्लोजिंग इसकी 35,000 पे हुई है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो बॉस if this level gets broken, market will be going downside once again, ठीक है। now if it has to go up, market अगर gap up open होता है, pull back and 35,400 का level is with the going to be the target somewhere, that means 150-200 का पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड अगर वो भी ब्रेक हो जाता है ना, लेट्स से दैट आल्सो गेट्स ब्रोकन, if you see this point, this level जहां से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा था इन 30 मिनट्स और इवन 1 hour टाइम फ्रेम, 35,700 का लेवल जो होगा वो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 35। ये ब्रेक हुआ तो अगला यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टारगेट, सी वी डोंट हैव टू टेक ऑल द टारगेट इन वन शॉट, एक टारगेट मिल गया ना, एग्जिट द ट्रेड, अगेन आफ्टर द पुल बैक यू आर गेटिंग द कंफर्मेशन देन एंटर, ठीक है। And the most important thing is that you don't need to be in the market from 9:15 till 3:13 options, nahi jarurat nahi, over trading is always applicable to all the traders, okay। तो there are different kinds of trading styles, कुछ लोगों का होता है कि वो स्टार्टिंग से हेज करते हैं जाके एंड में प्रॉफिट करते हैं, बट इफ यू आर अ डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है, यू शुड कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस, आपको प्रॉफिट्स बुक करना जरूरी है, बिकॉज इफ वन थिंग गोज रॉन्ग पूरे दिन का मेहनत चला जाता है, ठीक है।
नाउ इन केस इफ मार्केट लेट्स से कि यहां से या फिर यहां से रिवर्स करता है, बेसिकली चेंज इन द ट्रेंड, देन वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड, और यहां से तो चांसेस होंगे कि रिवर्सल के, देन ऑल्सो वी कैन लुक फॉर सेलिंग एंड। ठीक है, ये हमारा प्लान हो गया। दूसरा फॉर द बाइंग की इफ मार्केट इज रिवर्सिंग लेट्स से, तो पुल बैक फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड। मतलब मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है या फिर यहां से कर रहा है, तब हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं, मतलब अपना अप ट्रेंड के लिए। हम ऑलवेज रिमेंबर दिस। बैंक निफ्टी में इफ वी सी द नेक्स्ट एक्सपायरी, people have made the position at 35,000, 18,000 more calls have been added today. ठीक है, and towards sell side 30 today only people have added 35,000. आज ही लोगों ने 35,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया, मींस इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो 35,500 का लेवल मे बी टुमारो वी कैन सी इट इजीली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एनालिसिस।